Rubab, I hope you enjoyed your class today. Yes, ma'am. Now your class is over. कल से आपको holidays है. Rubab, don't be so excited. आपको अपना holidays homework भी करना है. Holidays homework. Don't worry Rubab, आपको सिर्फ 3 fun science experiments तो करने हैं. मैं आपकी मम्मा को email send कर रही हूँ. मम्मा आपकी help कर देंगे. Okay, bye Rubab. Have a nice holidays. Okay, ma'am. A few moments later. Let me check. Show me your iPad. Oh wow, Rubab! Do you know Rubab मैम ने क्या भेजा है? क्या भेजा है? You know about it? बहुत ही अच्छे fun science experiments हैं. Rubab, तो करें हम experiment. We do 3 science experiments. How many? 1, 2, 3. For the first experiment, we need 1 plastic bottle, vinegar. इसमें मैंने vinegar पहले ही डाल के रखा हुआ है. I am the one, the way your son. And we need baking soda, 1 balloon. Now you know magic will happen. Guys, magic होने वाला. हम कर रहे हैं vinegar and baking soda experiment. रुबाब का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, साइंस एक्सपेरिमेंट. रुबाब, अब इसमें ना बेकिंग सोडा डालना है. Now Rubab, this balloon will create a magic. Oh, yeah. Are you all ready? Ready Rubab? Yeah. Okay. अच्छा, अब आपने इस बैलून को पकड़ के धीरे से ऐसे स्ट्रेट कर देना. कर दो कर दो कर दो. Wow, ये तो magic ही हो गया. कितना बिग हो गया बैलून. अभी भी उसमें बेकिंग सोडा है ऑलरेडी. रुबाब, कैसा लगा आपको एक्सपेरिमेंट? बहुत अच्छा. अच्छा लगा ना? आपको कैसा लगा गाइस ये एक्सपेरिमेंट? अच्छा लगा होगा ना इनको भी. Now we are ready for experiment number 2. Now it's turn for sink and float experiment. Which experiment is this? Sink and float. आपको पता है सिंक क्या होता है? सिंक होता है जो अंदर डूब जाता है पानी में, है ना? और देखेंगे जो फ्लोट होता है वो तो ऊपर तैरना, स्विमिंग करना. स्विमिंग करते हो ना पूल में स्विमिंग. अब आप क्या क्या चाहिए हमें इस एक्सपेरिमेंट के लिए? नाउ लेट्स सी कि कॉटन सिंक करती है कि फ्लोट करती है ना? चलो नाउ रुबाब विल पुट. Okay, so let's go for the second one. ये सिंक कर रहे हैं कि फ्लोट कर रहे हैं? ये तो सिंक कर रहे हैं, ये तो डूब गए. चलो लीड डाले, आप डाले. तो बीच में ही रह गए. ये सिंक भी कर रहे हैं, फ्लोट भी कर रहे हैं. ये तो बीच में ही रह गए. Now, are you ready for third experiment? So this is our water and candle experiment. और अब put a little water in this. थोड़ा सा. Okay, Rubab, now put this glass upside down on the candle.
सारा वाटर ग्लास के साइड चला गया। मैंने भी मैंने आपसे ज्यादा एंजॉय किए। हम दोनों ने बहुत हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसे दोगी। लाइक शेयर